हे एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं करने वाली हूँ फेस आर्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये थोड़ा हॉरर भी है एंड बहुत क्रिएटिव भी है। सो जो लुक होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा एंड में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। लाइक यू कैन सी माई बेस इज़ ऑलरेडी डन। एंड ये जो जून का महीना होता है ये प्राइड मंथ होता है ट्रांसजेंडर के लिए। इसका जो साइन होता है वो है रेनबो एंड बेसिकली रेनबो कलर्स वी कैन यूज़। सो दिस इज़ द लुक दैट आई एम डूइंग। इसमें मैं करने वाली हूँ स्कल जो कि प्राइड कलर से होगा। आई एम यूजिंग क्रायलॉन के फेस पेंटिंग कलर जो कि वाटर एक्टिवेटेड कलर्स हैं। एंड लाइक यू कैन सी आपको ये सेम प्रोसेस आपको जो मैं कर रही हूँ आपको वही फॉलो करना है। एंड दीज आर रियली गुड कलर्स। तो आपको दोनों फेस के साइड में कलर करने हैं, वार्म एंड कोल्ड कलर इसके अंदर दोनों हैं। बेसिकली जो रेनबो के कलर्स होते हैं एंड मे बी थोड़े बहुत स्लाइटली एज डिफरेंट हो बट you can manage that, right? So this is how I'm gonna do it, and this is as if it's skull painting. So this is gonna be horror and it's gonna be for Pride month. Now I'm using pink color, and you can use any painting brush that you can buy from any stationery. Now it's almost done. Now with the help of white color I am making teeth, and आपको थोड़ा सा thin brush लेना है and just be careful and just do it with steady hands. आपको बहुत आराम से डेडिकेटेड होके ये बनाना है because it will took some time and you don't need to be perfect but at least you have to be careful. Now I am using black color and this is the best part. Now I am doing my nose and this is how you have to do it. And make sure you make this line a little bit thinner. मुझसे थोड़ा सा मोटा बन गया था, so आपको थोड़ा सा पतला ब्रश यूज़ करना है। एंड आई एम यूजिंग टेक मी बैक टू ब्राज़ील BH कॉस्मेटिक Eyeshadow पैलेट। एंड आपको जो आपने पेंटिंग कलर किए हैं उनको सेट करना है तो आपको हमेशा पाउडर ही यूज़ करना है, पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट दैट इज़ मस्ट। एंड इससे इनकी इंटेंसिटी सैचुरेशन भी बढ़ता है। सो दिस इज़ गोना लुक रियली गुड एंड आराम से बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना है एंड बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड एंड बहुत अमेजिंग लुक लगने वाला है। जो भी आपके कलर हैं वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड एंड बहुत अमेजिंगली आएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। नाउ दिस लुक रियली डिफरेंट, लाइक यू कैन सी it is brighter and amazing. You have to blend it properly. There should be no lines. So now I am completing my teeth area, mouth area, and you have to be careful because it's the main part. And guys, if you're watching it, don't forget to subscribe to my channel. होपफुली यू आर लाइकिंग दिस लुक। एंड आप नीचे लिख सकते हैं आपको जो भी चाहते हैं, कोई नया लुक मैं ट्राई करूं, कोई भी ट्यूटोरियल आई मेकअप का या स्किन केयर, सो यू कैन राइट दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोना बी। आपको अच्छे से ब्लैक कलर से भी इसको सेट करना है सो डैट ये बहुत इंटेंसिफाई हो जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट गाइज। एंड नाउ आई एम यूजिंग BH कॉस्मेटिक ब्रश आई शेडो यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट मेकिंग सम ड्रिप्स एंड दिस इज़ सो ईजी। एंड आप इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं फेस पेंटिंग कलर भी, बट आई एम यूजिंग आई शेडो, सो इट्स योर विश। एंड गाइज
आई विल बी सो थैंकफुल अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, बिकॉज इट टुक सो मैनी आवर्स टू डू द लुक एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट डन, लाइक यू कैन सी. वाओ, इंटेंसिफाई द कलर बिकॉज दैट्स द बेस्ट पार्ट, वही एनहेंस करेगा आपके लुक को. एंड नाउ द लुक इज़ डन बट आवर आईज इज़ लेफ्ट. तो साथ साथ थोड़ी सी आईज़ भी कर लेते हैं. आप कोई भी आई मेकअप कर सकते हैं इसमें. आई जस्ट यूज़ ब्राउन कलर एंड आई जस्ट पुट सम आई लाइनर एंड शिमरी शेड ऑन इनर साइड एंड दैट्स डन. दिस इज़ ऑलमोस्ट डन and I am using the face painting color for eyeliner. I am not using any eyeliner. So this is really good and the look is done, guys. Hope you liking this look. This is really good. If you love watching this video, do like and subscribe and I will see you in my next video. Till then you can just take care of yourself. and अगर आप चाहते हैं मैं कोई भी स्पेसिफिक लुक करूँ, मेकअप लुक करूँ या कोई प्रोडक्ट रिव्यू करूँ या इसके अलावा फेस आर्ट करूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. सो बाय बाय.